national income aggregates. National income aggregates क्या होता है? This topic is national income accounting. We are going to study national income accounting, है ना? कैसे study करेंगे? Right? So we are going to calculate certain aggregates. Aggregates मतलब certain sums. We are going to calculate certain aggregates, and these are the list of those aggregates. It's GDP at MP, NDP at MP, NDP at FC, NNB at FC, GNP. अब ये बेसिकली ये 5 चीजें हम हर इकोनॉमी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. इंडिया की जीडीपी क्या है, इंडिया की एनडीपी क्या है, इंडिया की एनडीपी एट एफसी क्या है, इंडिया की एनएनपी क्या है. वी कैन कैलकुलेट दीज एग्रीगेट्स फॉर एवरी इकोनॉमी एंड कंपेयर देम. सबके थोड़े थोड़े अलग अलग डेफिनेशंस हैं. ऑलराइट, सो द फर्स्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शॉर्ट फॉर जीडीपी. दैट्स द शॉर्ट फॉर जीडीपी व्हिच इज द ग्रॉस. नाउ द सिंपलेस्ट वे टू लर्न एनआईए वुड बी कि हम ये जो वर्ड्स हैं एग्जैक्टली उन वर्ड्स के बेसिस पे चले. ग्रॉस का कुछ मतलब होता है, डोमेस्टिक का कुछ मतलब होता है, प्रोडक्ट सबका साथ में सबके लास्ट में लगता है बिकॉज प्रोडक्ट मींस आउटपुट. तो प्रोडक्ट को छोड़कर व्हाटएवर वी टर्म्स वी यूज ग्रॉस डोमेस्टिक उसका कुछ मतलब है, वी यूज नेट डोमेस्टिक कुछ मतलब है, वी यूज नेट नेशनल कुछ मतलब है. सो एवरी टर्म हियर मीन समथिंग. उस टर्म के हिसाब से हमें चलना है. तो व्हेन इट इज रिटन ग्रॉस एंड डोमेस्टिक देयर इज सम मीनिंग टू इट. Okay, so let us understand the meaning to it. Now, gross and domestic. Gross and domestic is what? Gross मतलब होता है inclusive of depreciation. Okay, gross मतलब होता है inclusive of depreciation. Okay, domestic. अब domestic का क्या मतलब है? Domestic का मतलब होता है, remember I told you that कोई भी income हम जब income calculate करते हैं तो हम income को 2 तरीकों से देख सकते हैं. एक तरीका होता है इनकम देखने का, इज इट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंडिया के लैंड पर प्रोड्यूस्ड है क्या, राइट, व्हिच वाज द कांसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी. इंडिया के लैंड पर प्रोड्यूस्ड है क्या. तो जब वो चीज इंडिया के लैंड पर प्रोड्यूस्ड होती है उसे डोमेस्टिक कहते हैं. सो जब हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो हम वो चीजों की बात कर रहे हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस हुई है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर जापानीज कार मेकर है टोयोटा, वो इंडिया में आके प्रोड्यूस कर रहा है तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया के आएगा. राइट, सो इंडिया का डोमेस्टिक, इंडिया के लैंड पर जो भी काम होता है वो इंडिया की डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएगा, चाहे उसको इंडियंस ने बनाया हो कि नहीं बनाया हो, चाहे जापानीज लोग यहाँ पे आके काम करे, चाहे चाइनीज कंपनी यहाँ पे आके काम करे, जो भी वहां पे आके काम करे, डजंट मैटर. द पॉइंट इज द लैंड इज इंडियन. ओके, सो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इंडियन लैंड मास पर कितना प्रोडक्शन हुआ. गॉट इट एवरीवन? इंडियन लैंड मास पर कितना प्रोडक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, अब उसका काउंटर पार्ट क्या होता है कि अगर ये डोमेस्टिक है तो जो इंडियंस बिजनेस करते हैं वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड, अगर हम ग्रॉस को ग्रॉस ही रहने दें, ओके, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. जैसे ये जीडीपी हुआ वो हुआ जीएनपी, बीच का वर्ड चेंज हो गया. तो जब हम बात करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, हम बात करेंगे वो आउटपुट जो इंडियंस ने प्रोड्यूस किया है. अब इंडियन ने चाहे इंडिया में प्रोड्यूस किया हो या इंडिया से बाहर किया हो, पर जो प्रोडक्शन इंडियंस ने की है, राइट, एंड इंडियंस किसको हम बोलते हैं, जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया, लास्ट क्लास, राइट, जो हमने कहा था रेसिडेंट्स, इंडियन रेसिडेंट्स. सो इंडियन रेसिडेंट्स ने जो प्रोडक्शन किया है दैट विल बी पार्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ है that's called gross domestic product. Okay, so gross domestic product is the market value of what? Final goods and services. Remember I said that if you do final, like if there's a car, उसका engine भी किया, car भी किया, तो engine को 2 बार count कर लिया ना. So only final goods and services, not what is used for resale. Engine वाले ने car वाले को engine बेचा, तो engine तो resale के लिए use हुआ, or it was used not for final consumption but for further use in production. So only the total value, market value means at market prices, market value of final goods and services produced within the nation's borders in a given time period, which is usually a year, that is called gross domestic product. So I'm going to repeat that. What is gross domestic product? It is the market value of final goods and services produced within a nation's borders during a given time period. That is called gross domestic product. Okay, so market value means the total dollar value, rupee value, or proper market price of goods and services. Okay, final goods and services, that I've already explained, that final goods and services are what
is finally used by someone, not resold. So finally, what is used by consumers and what is used by producers, both. Okay, that is called final goods and services. And intermediate goods are those which are produced by one firm but are used for processing by another firm. Okay, so we've done this. What is intermediate goods? Net domestic product, I just said. So first thing was, so let's go from gross domestic product to net domestic product. Now, how will I go from gross domestic product to net domestic product? The difference between the words gross and net will always, okay, please remember, the difference between gross and net will always be gross minus depreciation is net. And it could be any variable. So gross domestic product, net domestic product, gross investment, net investment, gross inventory, net inventory. Anytime we use the word gross, it means we have not yet subtracted depreciation. Every time we use the word net, it means we have, yes, subtracted depreciation. Okay, there is no other meaning of gross and net. चाहे वो किसी भी वेरिएबल्स के साथ अटैच्ड हो, चाहे वो कैसे भी यूज्ड हो, ग्रॉस एंड नेट में एक ही डिफरेंस है, दैट इज डेप्रिसिएशन. Everybody clear with this? Okay, so in questions you will just gross of something, net of something. Whenever it is gross of something means depreciation not subtracted yet. Whenever it is net of something means depreciation has been subtracted. Okay, so that is the first meaning of the term net domestic product. And since it is just domestic product, meaning this is the same, it is the value of final goods and services within the domestic territory of a country. Okay, so depreciation, it means many things, like I explained in the last class. The use of plant and machinery, right? Machinery getting old, obsolescence, technology advancing and machinery getting useless. Everything comes in depreciation. Okay, all right.